Addressing Disparities Post-COVID. Arooj Waheed Dar. Published November 21, 2022. Dawn Editorial. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. COVID-19 has exposed the inequalities that persist in terms of access to opportunities in Pakistan, largely stemming from gender, income and wealth inequalities. When COVID-19 hit, there was a phase of rapid digitization, during which only those with access to technology could operate. In Pakistan, where internet access is limited to 33% of the population, with 76% of this access further limited to 4 major cities, and where computers/laptops/tablets are owned by only 12% of households, the digital divide widened economic inequalities. Non-access to the internet and/or digital devices completely isolated the poor from online work and educational opportunities. Hence, Pakistan witnessed the knowledge gap widening due to unequal access to technology as online classes were conducted by only a handful of private schools. Most public schools and low-fee private schools remained closed during the lockdowns, leading to a hike in dropout rates as parents wanted to avoid paying fees. The youth of Pakistan remained severely disadvantaged during this time. Lockdowns, slow growth and business closures reduced job opportunities for fresh graduates, causing a spike in the proportion of jobless graduates, from 36% pre-pandemic to 37% post-pandemic. The healthcare sector crumbled under the weight of COVID-19. There was a severe deficiency of drugs and equipment needed for treatment. While the rich were able to afford access to private healthcare, the poor had to struggle trying to secure spots in designated healthcare centers, making COVID-19 up to 10 times more deadly for them. Lockdowns, slow growth and business closures reduced job opportunities for new graduates. During the lockdowns, the working population in Pakistan dropped from 35% to 22%. Approximately half the working population experienced job losses or a reduction in income. 74% belonged to the informal sector. And 27.35% did not get any income during this period. During this time, mounting food prices, in conjunction with loss of income, raised the alarm of rising food insecurity. Supply chain disruptions and locust attacks in 2020 caused food prices to surge by a whopping 29%. Half of Pakistani households had to switch to a lower quality or quantity of food, and 60% were unable to eat nutritious food. Severe food insecurity increased from 3% in 2019 to 10% during the lockdowns. Meanwhile, moderate food insecurity rose to 30%. Impact on women. Women remained disproportionately disadvantaged during this time. Reproductive and other health services, particularly for women, were heavily compromised. Lady health workers were unable to provide outreach services in compliance with SOPs. Consequently, Pakistan witnessed a 30% decrease in family planning services, 19% reduction in skilled attendance at birth, 10% decrease in newborn care, and 26% decrease in vaccination coverage. Approximately 17 million children under 5 years of age missed out on routine immunizations. Men being confined to their homes and the reduction in incomes increased the likelihood of women being subjected to gender-based violence. There was a significant surge in the reported cases of domestic violence, while the number of unreported cases were feared to be much higher. School closures and lockdowns increased demand for unpaid care work. In Pakistan, 80.5% of economically inactive women were out of the workforce due to unpaid care responsibilities. 94% of economically active women were engaged in the informal sector, with no job security, and had to suffer from job or income loss. Learning losses are also expected to be higher in females as they are 8% less likely than men to own cell phones, and 20% less likely to use the internet, rendering them incapable of pursuing an online education.
At the start of the lockdown, around 26 million students dropped out of school. 50% of them were children who never returned to school once they reopened. 60% of children who never returned to school were females. The way forward. The importance of investing in public health and education services cannot be emphasized enough. Policymakers need to prioritize development expenditures over all else. Tax policies need to be made more progressive, and an effective wealth tax must be implemented. The absence of universal health coverage in Pakistan exacerbated the vulnerability of the poor to health and economic challenges posed by the pandemic. The Sehat Sahulat card issued by the government offered free treatment in only a few hospitals, with the precondition that the patient was admitted in the hospital. Other facilities like OPD, dispensary and medical tests remained out of reach. During the pandemic, the government made cash transfers under the ASAS program. These transfers helped the poorest segments cope with the disruption caused by the pandemic. However, to have any real impact on equality measures, transfer payments need to be made periodically rather than as one-offs. In this regard, the Benazir Income Support Program remains more effective in plugging inequalities. The digital divide was crucial in creating a winners versus losers situation during the pandemic. The government needs to draw up a comprehensive strategy to close the technological divide by providing digital infrastructure without discrimination. But special consideration needs to be given to marginalized groups, with a particular focus on creating opportunities for the youth. Technical and vocational trainings are offered by government institutes across Pakistan. However, enrollment rates remain low, especially for women. These programs need to be revamped to target specific skills to improve labor productivity. An improvement in productivity will help Pakistan improve its current account deficit by making industries competitive internationally. The economy should be regularized to ensure job security, better working conditions, and widening of the tax base. This is achievable if the government incentivizes small businesses to register themselves by creating opportunities for innovation and entrepreneurship. In this regard, the new SME policy is a step in the right direction. Businesses should be incentivized to allow employees who are not physically required in office to work from home in order to improve the air quality levels in urban areas. This will also prove beneficial for women who are economically inactive due to mobility issues. In a nutshell, Pakistan must display its commitment to the SDGs with greater youth representation. The writer is a lecturer of economics and research fellow at IBA, Karachi. Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share. कोविड-19 ने पाकिस्तान में मौक़े तक रसाई के मामले में मौजूद अदम मुसावात को बेनकाब कर दिया है, जो ज़्यादातर सिर्फ आमदनी और दौलत की अदम मुसावात की वजह से पैदा होता है। जब कोविड-19 ने हमला किया, तो तेज़ी से डिजिटाइजेशन का एक मरहला था, जिसके दौरान सिर्फ वही लोग काम कर सकते थे जिनके पास टेक्नोलॉजी तक रसाई थी। पाकिस्तान में, जहां इंटरनेट तक रसाई 33% आबादी तक महदूद है, इस रसाई का 76% मजीद 4 बड़े शहरों तक महदूद है, और जहां कंप्यूटर/लैपटॉप/टैबलेट सिर्फ 12% घरानों की मलकियत हैं, डिजिटल तकसीम ने माशी अदम मुसावात को बढ़ा दिया। इंटरनेट और डिजिटल आलात तक रसाई न होने से गरीबों को ऑनलाइन काम और तालीमी मौक़े से मुकम्मल तौर पर अलग थलग कर दिया गया। लिहाजा पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी तक गैर मसावी रसाई की वजह से इल्म का फ़र्क बढ़ता हुआ देखा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासें सिर्फ मुट्ठी भर निजी स्कूलों के जरिए चलाई गई। लॉकडाउन के दौरान ज़्यादातर सरकारी स्कूल और कम फीस वाले निजी स्कूल बंद रहे, जिसकी वजह से ड्रॉप आउट की शरह में इजाफा हुआ, क्योंकि वालिदैन फीस अदा करने से बचना चाहते थे। इस दौरान पाकिस्तान के नौजवान शदीद तौर पर पसमानदा रहे। लॉकडाउन, सुस्त शरह नमू और कारोबार की बंदिश ने नए ग्रेजुएट्स के लिए रोजगार के मौक़े को कम कर दिया है, जिसकी वजह से बेरोजगार ग्रेजुएट्स के तनासुब में इजाफा हुआ है, जो वबाई मर्ज से पहले 36% से बढ़कर वबाई मर्ज के बाद 37% हो गया है।
सेहत की देखभाल का शोबा कोविड-19 के बोझ तले दब गया। इलाज के लिए दरकार अद्वियात और साजो सामान की शदीद कमी थी, जबकि अमीर निजी सेहत की देखभाल तक रसाई हासिल करने के काबिल थे। गरीबों को नामजद सेहत की देखभाल के मराकज़ में मकामात को महफूज बनाने की कोशिश में जिदोजहद करना पड़ा। कोविड-19 उनके लिए 10 गुना ज्यादा मुहलिक बना दिया। लॉकडाउन, सुस्त तरक्की और कारोबार की बंदिश ने नए ग्रेजुएट्स के लिए मुलाजमत के मौके को कम कर दिया। लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तान में काम करने वाली आबादी 35% से कम होकर 22% रह गई। तकरीबन निस्फ काम करने वाली आबादी को मुलाजमत के नुकसान या आमदनी में कमी का सामना करना पड़ा। 74% का ताल्लुक गैर रस्मी शोबे से था और 27.35% को इस मुद्दत के दौरान कोई आमदनी नहीं मिली। इस अरसे के दौरान खुराक की बढ़ती हुई कीमतों, आमदनी के नुकसान के साथ मिलकर बढ़ती हुई ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के खतरे की घंटी बजा दी। 2020 में सप्लाई चेन में खलल और टिड्डी दिल के हमलों की वजह से खुराक की कीमतों में 29% इजाफा हुआ। निस्फ पाकिस्तानी घरानों को कम मेयारा खुराक की मिकदार की तरफ जाना पड़ा और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाने से कासिर थे। शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ 2019 में 3% से बढ़कर लॉकडाउन के दौरान 10% हो गया। दरियासना, एतदाल पसंद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ 30% तक बढ़ गया। ख़वातीन पर असरात। इस दौरान ख़वातीन गैर मुतनासिब तौर पर पसमानदा रहे। तौलीदी और दीगर सेहत की खिदमात, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा समझौता किया गया था। लेडी हेल्थ वर्कर्स SOPs पर अमल करते हुए आउटरीच सर्विसेज फराहम करने से कासिर रहे। नतीजतन पाकिस्तान में ख़ानदानी मनसूबा बंदी की खिदमात में 30% कमी, पैदाइश के वक्त हुनरमंदों की हाजिरी में 19% कमी, नौज़ायदा बच्चों की देखभाल में 10% कमी और वैक्सीनेशन कवरेज में 26% कमी देखी गई। 5 साल से कम उम्र के तकरीबन 17 मिलियन बच्चे मामूल के हिफाजती टीकों से महरूम रहे। मर्दों के अपने घरों तक महदूद होने और आमदनी में कमी की वजह से ख़वातीन के सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनने के इम्कानात बढ़ गए। घरेलू तशद्दुद के रिपोर्ट होने वाले वाक़यात में नुमायां इजाफा हुआ है, जबकि रिपोर्ट न होने वाले मामलात की तादाद बहुत ज़्यादा होने का खदशा है। स्कूलों की बंदिश और लॉकडाउन की वजह से बिला मुआवजा निगहदाश्त के काम की मांग में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में 80.5% माशी तौर पर गैर फ़ाल ख़वातीन बग़ैर तनख्वाह की देखभाल की जिम्मेदारियों की वजह से अफरादी क़ुव्वत से बाहर थी। इक़्तिसादी तौर पर सरगर्म ख़वातीन में से 94% गैर रस्मी शोबे में मसरूफ़ थी। उनके पास मुलाजमत का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं था और उन्हें मुलाजमता आमदनी के नुकसान का सामना करना पड़ा। ख़वातीन में सीखने के नुकसानात भी ज़्यादा होने की तवक्को है, क्योंकि वो मर्दों के मुकाबले में सेल फ़ोन के मालिक होने का इम्कान कम है और इंटरनेट इस्तेमाल करने का इम्कान कम है, जिससे वो ऑनलाइन तालीम हासिल करने के काबिल नहीं हैं। लॉकडाउन के आगाज़ पर तकरीबन 26 मिलियन तालिब इल्मों ने स्कूल छोड़ दिया। इनमें से 50% ऐसे बच्चे थे जो दोबारा खिलने के बाद कभी स्कूल वापस नहीं आए। 60% बच्चे जो कभी स्कूल वापस नहीं आए वो ख़वातीन थीं। आगे बढ़ने का रास्ता। सेहत आम्मा और तालीम की खिदमात में सरमायाकारी की अहमियत पर काफ़ी जोर नहीं दिया जा सकता है। पॉलिसी साजों को तरक्याती अखराजात को हर चीज़ पर तरजीह देने की ज़रूरत है। टैक्स पॉलिसियों को ज़्यादा तरक्की पसंद बनाने की ज़रूरत है और एक मुअस्सर वेल्थ टैक्स नाफिज किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अदम मौजूदगी ने वबाई अमराज की वजह से पैदा होने वाले सेहत और माशी चैलेंजों के लिए गरीबों के खतरे को बढ़ा दिया। हुकूमत की जानिब से जारी करदा सेहत सहूलत कार्ड में सिर्फ चंद अस्पतालों में मुफ्त इलाज की पेशकश की गई थी, इस शर्त के साथ कि मरीज को अस्पताल में दाखिल किया जाए। OPD, डिस्पेंसरी और मेडिकल टेस्ट जैसी दीगर सहूलियात पहुंच से बाहर रहे। वबाई अमराज के दौरान हुकूमत ने एहसास प्रोग्राम के तहत नकद रकम की मुंतकली की। इनमें नतकुलियों से गरीब तरीन तबकात को वबाई अमराज की वजह से पैदा होने वाली रुकावट से निमटने में मदद मिली। ताहम मुसावात के इक़दामात पर कोई हकीकी असर डालने के लिए मुंतकली की अदायगियों को वक्तन फ़वक्तन करने की ज़रूरत होती है, न कि एक बार के तौर पर। इस सिलसिले में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अदम मुसावात को दूर करने में ज़्यादा मुअस्सर है।
वबाई मर्ज के दौरान जीतने वाले बमुकाबला हारने वालों की सूरत हाल पैदा करने में डिजिटल तकसीम अहम थी। हुकूमत को बगैर किसी इम्तियाज के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करके तकनीकी तकसीम को ख़त्म करने के लिए एक जामे हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन नौजवानों के लिए मौक़े पैदा करने पर खुसूसी तवज्जो देने के साथ पसमानदा ग्रोहों पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान भर के सरकारी इदारों की जानिब से तकनीकी और पेशा वराना तरबियत फराहम की जाती है। ताहम इंदराज की शरह कम रहती है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। लेबर पैदावारी को बेहतर बनाने के लिए मखसूस महारतों को निशाना बनाने के लिए उन प्रोग्रामों को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पैदावारी सलाहियत में बेहतरी से पाकिस्तान को बैन अल-अक़वामी सतह पर सनतों को मुसाबकती बनाकर अपने करंट अकाउंट खसारे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रोजगार के तहफ़्फ़ुज़, बेहतर काम के हालात और टैक्स बेस को वसी करने को यकीनी बनाने के लिए मईशत को बाकायदा बनाया जाना चाहिए। अगर हुकूमत जिद्दत तराज़ी और एंटरप्रेन्योरशिप के मौक़े पैदा करके छोटे कारोबारों को खुद को रजिस्टर करने की तरगीब देती है तो यह काबिल हुसूल है। इस हवाले से नई SME पॉलिसी दुरुस्त समत में एक कदम है। शहरी इलाकों में हुआ के मेयार की सतह को बेहतर बनाने के लिए कारोबारी इदारों को इन मुलाजमीन को घर से काम करने की इजाज़त देने के लिए हौसला अफजाई की जानी चाहिए जो दफ्तर में जिस्मानी तौर पर ज़रूरी नहीं है। ये इन ख़वातीन के लिए भी फ़ायदामंद साबित होगा जो नक़्लो हरकत के मसाइल की वजह से माशी तौर पर गैर फ़ाल हैं। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान को नौजवानों की ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी के साथ पायदार तरक्की के अहदाफ के हवाले से अपने अज़्म का इजहार करना चाहिए। मज़मून निगार IBA कराची में इकनॉमिक्स के लेक्चरर और रिसर्च फेलो हैं। Subscribe our channel Dawn Vocabulary with Urdu meaning for more upcoming new videos. Like, subscribe, comments and share.